Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will study about the wrist complex. Wrist is composed of radiocarpal and intercarpal articulation. हमारी जो wrist होती है वो radiocarpal और intercarpal articulation से मिलकर बनी होती है. So basically जो हमारे पास radiocarpal joint होता है वो ये रेडियस हमारे पास ये जो है ये रेडियस और जो इन कार्पल बोन के दरमियान बनता है वो रेडियो कार्पल जॉइंट होता है. और इन जो कार्पल बोन्स जैसे कैपिटेट, ट्राइक्विट्रम, लिनेट्स के फर्ड जो आपको नज़र आ रहा है इनके दरमियान जो बनता है हमारे पास इंटर कार्पल जॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं रेडियो कार्पल इंटर कार्पल आर्टिकुलेशंस. द मोस्ट रिस्ट मोशन ऑकर एट रेडियो कार्पल जॉइंट. ज़्यादातर जो रिस्ट की मोशन होती है वो रेडियो कार्पल जॉइंट के ऊपर होती है. रेडियस और इन कार्पल बोन के दरमियान रिस्ट की मोशन ज़्यादातर होती है. क्लोज बैक पोजीशन इसकी एक्सटेंशन एंड रेडियल डेविएशन. एक्सटेंशन और रेडियल डेविएशन इसकी क्लोज बैक पोजीशन होती है. हमारी जो स्ट्रक्चर होती है वो रेडियो कार्पल जॉइंट जो क्या होते हैं इस पे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ रिस्ट में रेडियो कार्पल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे. तो रेडियो कार्पल जॉइंट जो होता है वो कॉन्डाइलोइड आर्टिकुलेशन बिटवीन द रेडियस एंड 3 कार्पल बोन. यानी जो रेडियस होती है ना वो आगे से 3 कार्पल बोन के साथ मिल रही होती है. और किससे? स्केफोइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्विट्रम. स्केफोइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको. ये है रेडियस, ये आगे से मिल रही है स्केफोइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम के साथ. स्केफोइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम 3 बोन के साथ ये मिलती है. दिस जॉइंट कंप्राइज द रिस्ट. और यही जॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं? रिस्ट जॉइंट. अब दिस जॉइंट अलाउ द सैजिटल प्लेन मोशन. अब वो जॉइंट है उसके कौन कौन सी मोशन होती है? नंबर 1 फ्लेक्शन, ये करके दिखा रहे हैं. फ्लेक्शन किसे कहते हैं? एक्सटेंशन. अब हाइपर एक्सटेंशन. हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं जैसे ये एक्सटेंशन है आप इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दें तो वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा. एंड फ्रंटल प्लेन मोशन में कौन कौन सी करती है? रेडियल डेविएशन, अनलर डेविएशन और सर्कमडक्शन. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो रिस्ट की बोन्स. रिस्ट की बोन्स कौन सी होती है हमारे पास? रिस्ट की बोन होती है स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रम, पिजिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हमेट. इसको हम एक और सिनोनिम्स जो इसका बन सकता है निमोनिक, उससे हम याद कर सकते हैं. और इसका निमोनिक है सम लेडीज़. ऐसे सम लेडीज़ ट्राई पीपल दैट दे कैन नॉट हैंडल. सम लेडीज़ ट्राई पीपल दैट दे कैन नॉट हैंडल. सम से आ जाता है स्केफोइड, लेडीज़, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रम, पीपर, पिजिफॉर्म, ट्रेपेजियम, दैट दे, ट्रेपेजॉइड, कैन नॉट, कैपिटेट एंड हैमेट हैंडल. सो ये नीचे लिखा हुआ है सोफिया उड़न तेरे टिंडे कच्चे रह गए हैं. ये ज़्यादातर नहीं है, इससे ज़्यादा इससे ये वाला था कि सम लेडीज़ ट्राई पीपल दैट दे कैन नॉट हैंडल. इस तरह आपसे रिस्ट की बोन्स के बारे में याद कर सकते हैं. सम यहाँ से सम लेडीज़ ट्राई पीपल दैट दे कैन नॉट हैंडल. पिजिफॉर्म को इसमें इसलिए बताएगा कि पिजिफॉर्म एक स्मॉल सी बोन होती है जो कि ट्राइक्विट्रम के ऊपर होती है, ट्रेपेजियम के ऊपर होती है. ट्रेपेजियम के बिल्कुल ऊपर पास एक छोटी सी हुक होती है, उसे हम कहते हैं पिजिफॉर्म बोन. यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, ये देखें छोटी सी जो हुक शेप बनी है ना इसको हम पिजिफॉर्म बोन कहते हैं. और ये बनी किसके ऊपर है? ट्रेपेजॉइड के ऊपर. ट्रेपेजॉइड के ऊपर बनी है. ठीक है. अब हमारे पास हैंड है. हैंड में हमारे पास मेटाकार्पल 5 होती हैं, फ्रिंजेस 14 होती हैं. मेटाकार्पल 5 किस तरह होते हैं कि देखो 1 2 3 मेटाकार्पल्स होती हैं यहाँ तक. 1 2 3 4 5 है हमारे पास. फ्रिंजेस 14 इसलिए क्योंकि हमारी जो थंब है उसमें 2 होती हैं, एक नहीं होती. आपने अक्सर देखा होगा जो थंब होगा उसमें 2 बोन्स होती हैं, बाकी सब में 3 होती हैं, लेकिन थंब में 2 होती हैं. सिर्फ फ्रिंजेस जो है वो 14 है और मेटाकार्पल जो है 5 होते हैं. मेटाकार्पल ऊपर वाली कितने हमारी उंगलियां जो हैं उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल फ्रिंजेस. फ्रिंजेस जो होते हैं जैसे प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल में डिवाइड हैं. प्रॉक्सिमल कौन सी होती हैं? ये जो शुरू से शुरू होती हैं ये प्रॉक्सिमल है, ये मिडल है और ये वाली डिस्टल है एंड पे जो आती है. फ्रिंजेस 1 जो थंब, लेकिन जो थंब की है ना उसमें सिर्फ 2 ही होंगी, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, उसमें मिडल नहीं होती. सैडल जॉइंट. कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट में कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट होते हैं जो हमारी कार्पस और मेटाकार्पल के दरमियान बनती है. सैडल जॉइंट बिटवीन द मेटाकार्पस एंड ट्रेपेजियम.
जो सैडल जॉइंट होता है वो बनता है मेटाकार्पस और ट्रेपीजियम के दरमियान। सैडल जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पस एंड ट्रेपीजियम। मूवमेंट ये एडक्शन करवाता है, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन और अपोजिशन। मेटाकार्पस और ट्रेपीजियम के दरमियान कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट बनता है, मेटाकार्पस और ट्रेपीजियम के दरमियान। ये देखें, हमारे पास ट्रेपीजियम है और उसके ऊपर मेटाकार्पस। ये 5 बोन्स होते हैं, ये 5 मिलकर क्या बनाते हैं? कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट कौन सी होती है? जो आगे से नीचे की तरफ बनती है। कॉन्डोलाइड साइनोवियल जॉइंट होती हैं, ये भी मूवमेंट होती है इनकी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, सब पोजीशन एट MCP5। 5th मेटाकार्पल पे इसकी जो है वो मूवमेंट होती है। इंटरफेरेंशियल जॉइंट होते हैं वो साइनोवियल हिंज जॉइंट होते हैं, ओनली फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और इसमें ज़्यादातर नहीं होती। इंटरफेरेंशियल जॉइंट में प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट होते हैं और डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट होते हैं। मूवमेंट एंड ट्विस्ट जी मैं आपको बताती हूँ इसका और भी। इंटरफेरेंशियल जॉइंट में कौन सी मूवमेंट सिर्फ हो सकती है और ये कौन से जॉइंट होते हैं और इनकी कौन सी टाइप होती है। Motions of the Motion thumb. of the thumb में ये The motions of the thumb are complex and are often difficult to visualize, as multiple joints and planes are involved. The motions are crucial to the overall function of the hand, with amputation of the thumb resulting in 40% impairment. Amputation has also been cited as causing 22% disability of the whole person. In cases of thumb hypoplasia and carpometacarpal joint instability, thumb amputation and index pulsation is recommended. Because of the value of the thumb, reimplantation of the amputated thumb, abduction, adduction, and opposition, flexion, extension, abduction, adduction, and opposition. Valued as 50 to 60% of overall thumb function, opposition is one of the most critical motions. Abduction and adduction of the thumb occur mainly at the carpometacarpal joint. Abduction is described as the motion of the thumb away from the second metacarpal. Adduction is the opposite of this motion. These motions are defined in 2 planes. In radial abduction, adduction, the thumb moves parallel to the radius and the palm of the hand. A small range of motion is generally seen in the radial plane. Alternatively, in palmar abduction, adduction, the thumb follows a plane perpendicular to the palm of the hand. Clinically, these motions are not typically measured directly, but are assessed in the motion of opposition. Flexion and extension can occur at all 3 joints of the thumb, including the carpometacarpal joint, matacarpophalengeal joint, and interphalangeal joint. These motions at the carpometacarpal joint are often not measured, as they are challenging to quantify. The average flexion observed at the metacarpophalengeal joint is approximately 50 degrees, although this may be limited in some individuals to less than 30 degrees. Extension is not usually seen at the metacarpophalengeal joint. Flexion at the interphalangeal joint approaches 80 degrees on average. Typically, the interphalangeal joint is capable of approximately 5 degrees of extension. Opposition is a very important motion and, as mentioned, is valued as 50 to 60% of overall thumb function. It is comprised of several integrated motions: palmar abduction that transitions to adduction at the carpometacarpal joint, rotation at the carpometacarpal joint, and flexion at the carpometacarpal joint,
matacarpophalengeal joint, and interphalangeal joint. Composite motion involves crossing the thumb over the palm of the hand toward the base of the little finger. Complete opposition of the thumb may be defined in two ways: by the tip of the thumb touching the base of the fifth digit, or by the tip of the thumb touching the tip of the distance from the tip of the thumb to the base of the little finger, or from the tip of the thumb to the tip of the little finger. Alternatively, the degree of opposition may be determined by measuring from the flexor crease of the interphalangeal joint to the distal palmar crease over the third metacarpal. A normal span is at least 8 centimeters. Opposition may also be assessed by systematically touching the tip of the thumb to various parts of the hand, a clinical test outlined by carpometacarpal. In order to position the fingers and thumb. The hand must have adequate strength to grip objects firmly, but must also be coordinated to perform fine motor tasks with precision. The important structures of the hand can be divided into several categories. These include bones, joints, ligaments, tendons, muscles, nerves, and blood vessels. Let's define some common anatomic terms as they relate to the hand. This will make it clearer as we talk about the structures of the hand later. The front or palm side of the hand is referred to as the palmar side. The back of the hand is called the dorsal side. The half of the hand from the middle finger to the thumb is called the radial side. The other half is called the ulnar side. There are 27 bones within the wrist and hand. The wrist itself contains 8 small bones called carpals. The carpals join with the 2 forearm bones, the radius and ulna, forming the wrist joint. Further into the palm, the carpals connect to the metacarpals. There are 5 metacarpals forming the palm of the hand. One metacarpal connects to each finger and thumb. Small bone shafts called phalanges line up to form each finger and thumb. The main knuckle joints are formed by the connections of the phalanges to the metacarpals. These joints are called the metacarpophalengeal joints, or MCP joints. The MCP joints work like a hinge when you bend and straighten your fingers and thumb. The 3 phalanges in each finger are separated by 2 joints, called interphalangeal joints, or IP joints. The one closest to the MCP joint is called the proximal IP joint, or the PIP joint. The joint near the end of the finger is called the distal IP joint, or DIP joint. The thumb only has one IP joint between the 2 thumb phalanges. The IP joints of the digits also work like hinges when you bend and straighten your fingers and thumb. The joints of the hand, fingers, and thumb are covered on the ends with articular cartilage. This white shiny material has a rubbery consistency. The function of articular cartilage is to absorb shock and provide an extremely smooth surface to facilitate motion. There is articular cartilage essentially everywhere that 2 bony surfaces move against one another or articulate. Ligaments are tough bands of tissue that connect bones together. 2 important structures called collateral ligaments are found on either side of each finger and thumb joint. The function of the collateral ligaments is to prevent abnormal sideways bending of each joint. In the PIP joint, the middle joint between the main knuckle and the DIP joint, the strongest ligament is the volar plate. This ligament connects the proximal phalanx to the middle phalanx on the palmar side of the joint. The ligament tightens as the joint is straightened and keeps the PIP joint from bending back too far or hyperextending. Finger deformities can occur when the volar plate loosens from disease or injury.
Many of the muscles that control the hand start at the elbow or forearm. They run down the forearm and across the wrist and hand. Some control only the bending or straightening of the wrist. Others influence motion of the fingers or thumb. Many of these muscles help position and hold the wrist and hand, while the thumb and fingers grip or perform fine motor actions. Most of the small muscles that work the thumb and little finger start on the carpal bones. The bulge of muscle at the base of the thumb in the palm is called the thenar eminence. The bulge of muscle at the base of the little finger is called the hypothenar eminence. 4 muscles make up the thenar eminence: the abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, adductor pollicis, and opponens pollicis. Pollicis is the Latin term for thumb. Each of these muscles begins at the wrist, and each has a tendon that attaches to a different location on the base of the proximal phalanx of the thumb. Their names give a suggestion of what they do when they contract. The abductor pollicis brevis abducts, or moves the thumb away from the midline of the hand. The flexor pollicis brevis flexes or bends the thumb. The adductor pollicis adducts or moves the thumb towards the midline of the hand. The opponens pollicis moves the thumb into opposition. It pulls the thumb out from the palm and turns the pulp of the thumb to face the palm. This is the motion that allows you to place the tip of your thumb against the tip of your little finger, and are called the intrinsic muscles. The intrinsic muscles guide the fine motions of the fingers by getting the fingers positioned and holding them steady during hand activities. The tendons that allow each finger joint to straighten are called the extensor tendons. The extensor tendons of the fingers begin as muscles that arise from the backside of the forearm bones. These muscles travel towards the hand, where they eventually connect to the extensor tendons before crossing over the back of the wrist joint. As they travel into the fingers, the extensor tendons become the extensor hood. The extensor hood flattens out to cover the top of the finger and sends out branches on each side that connect to the bones in the middle and end of the finger. The place where the extensor tendon attaches to the middle phalanx is called the central slip. When the extensor muscles contract, they tug on the extensor tendon and straighten the finger. Problems occur when the central slip is damaged, as can happen with a tear. The flexor tendons allow the fingers and thumb to flex or bend to grip objects in the palm of the hand. The strong flexor muscles begin in the forearm, and just before they enter the wrist, the flexor muscles form the flexor tendons. The flexor tendons travel through the carpal tunnel, through the palm, and 2 tendons each travel into the volar side of each finger. These 2 tendons, the flexor superficialis and flexor profundus, travel through a special tunnel formed by a series of specialized ligaments that form pulleys. The flexor superficialis connects to the base of the middle phalanx. The flexor profundus tendon connects to the base of the distal phalanx. The thumb is a bit different since it only has 2 phalanges. The flexor pollicis longus begins in the forearm, and its tendon connects to the base of the distal phalanx of the thumb. The flexor pollicis brevis muscle begins in the wrist, and its tendon connects to the base of the proximal phalanx of the thumb. All of the nerves that travel to the hand and fingers begin together at the shoulder. The radial nerve, the median nerve, and the ulnar nerve. These nerves carry signals from the brain to the muscles that move the arm, hand, fingers, and thumb. The nerves also carry signals back to the brain about sensations, such as touch, pain, and temperature. The radial nerve runs along the thumb side edge of the forearm. It wraps around the end of the radius bone toward the back of the hand. It gives sensation to the back of the hand from the thumb to the third finger. It also supplies the back of the thumb and just beyond the main knuckle of the back surface of the ring and middle fingers. The median nerve travels through a tunnel within the wrist called the carpal tunnel.
This nerve gives sensation to the thumb, index finger, long finger, and half of the ring finger. It also sends a nerve branch to control the thenar muscles of the thumb. The thenar muscles help move the thumb and let you touch the pad of your thumb to the tips of each finger on the same hand, a motion called opposition. The ulnar nerve travels through a separate tunnel called Guillaume's canal. This tunnel is formed by two carpal bones, the pisiform and hamate, and the ligament that connects them. After passing through the canal, the ulnar nerve branches out to supply feeling to the little finger and half the ring finger. Branches of this nerve also supply the small muscles in the palm and the muscle that pulls the thumb toward the palm. Each finger has a pair of sensory nerves, one on each side, that runs to the tip of the finger. These nerves are called the digital nerves and supply sensation to the fingers. Traveling along with the nerves are the large vessels that supply the hand with blood. The largest artery is the radial artery that travels across the front of the wrist closest to the thumb. The radial artery is where the pulse is taken in the wrist. The ulnar artery runs next to the ulnar nerve through Guillaume's canal, which has been mentioned earlier. The ulnar and radial arteries arch together within the palm of the hand, supplying the front of the hand, fingers, and thumb. Other arteries travel across the back of the wrist to supply the back of the hand, fingers, and thumb. When our hands are free of problems, it's easy to take the complex anatomy of the hand for granted. The hand is formed by numerous structures. Each has an important role in the normal hand function. Injuries and conditions that change the way these structures work can greatly impact whether the hand functions normally.